Hello everyone, welcome back to the channel and I hope that you all must be doing great. So आज के NASA's video start करते हैं for 25th of September. So as per the Moody's, which is a credit rating agency, उनका कहना ये है कि आधार ID जो है, this is unreliable in hot humid India. Now उन्होंने reasons दिए हैं. So we are seeing कि amid India's digital infrastructure push, Moody's it says कि जो world का largest digital ID program है, that is Aadhaar, it often denies service to the users. एक ये concern है. It questions the reliability of biometric technology. According to Moody's, they have questioned कि biometric technology को आप किस हद तक उसके ऊपर rely कर सकते हो. And another warning that it has issued is regarding the privacy and security risk, जो again associated है because it is again यहाँ पे government is the central entity जो ये आधार IDs को सब manage करती है. So because of centralization, the privacy related to the data security and other security risks, ये कुछ concerns Moody's ने raise किए हैं, but definitely we know कि ये concerns exist करते थे. This is not the first time कि we are, actually acknowledging them or realizing कि ये risk भी exist करते हैं. जब हम बात करते हैं benefit की with the rollout of Aadhaar, we see कि direct benefit transfers में जो हमें massive improvement देखने को मिली है, जिसने हमें help किया है in financial inclusion. That is one major achievement of Aadhaar IDs. Apart from this, again, the ease of delivering beneficiaries of different schemes, the benefits that have been assured by the government, like you can take the example of PDS system, जहाँ पे again Aadhaar IDs को use किया जाता है to disburse them the food grains. So उसमें भी कुछ again errors exist करते हैं, the error of inclusion, error of exclusion. तो again कोई भी चीज हो उसके positive negatives दोनों होते हैं. So this is another major benefit जो हमने देखा है because of आधार ID. उसके अलावा इंजीनियरिंग की आप बात करोगे तो you will see कि वहाँ पे भी हम आधार IDs को use करते हैं when it comes to giving wages to the laborers. So a single entity which is controlling the user's ID credentials, it can dispose of the user data for the internal or third party profiling purposes also. So this is the concern that उन्होंने highlight करी. Aadhaar system, it faces hurdles, it including the burden of establishing authorization and reliability of the biometric technology, especially for the manual laborers in hot, humid climates. That is also questionable. So all digital IDs, they can have negative social repercussions as well. So this is the concern क्योंकि again, when we talk about the digital world, तो वहाँ पे the major risk is of cyber attacks. So these are few things जो highlight किए गए हैं, तो आपको mind में positive negatives दोनों लेके चलना है. Then multiple entry और exit options higher education में Indian model को suit नहीं करेगा. This is according to House panel. तो after several organizations, students and teachers की उन्होंने कुछ objections raise किए about this option key. There will be option of multiple entry, multiple exit according to this national education policy. So parliamentary standing committee on education, they have advised the center कि आपको again इस topic के ऊपर discussions hold करना important है with all the stakeholders. So implementation of the national education policy in higher education, it said कि the Indian institutions, they were likely to face several issues in implementing the system again, क्योंकि यहाँ पे massively चीजें change की जा रही है. अभी ऐसा कुछ आपके पास option नहीं होता है. This is a part of a feature of the NEP. तो सोचने की बात ये है कि ये इंडियन मॉडल को क्यों नहीं सूट करेगा. मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिए जाएगा. So again यहाँ पे भी positives में ये है कि जो again आपके पास freedom रहेगी, you can again devote your time to enhancing your skills for reskilling as per the again demand of the job market. उसके अलावा again you can participate in gig economy also. And apart from this, negatives में it might be possible कि जो again momentum break हो जाएगा with your exit.
That would be one of the negative things, and it would be again difficult to come back again and continue with same interest. And again, it might be possible कि उतने time period में आपका vision change हो जाए. So these are few of the personal things which can again hamper the quality of education. So National Education Policy 2020 promises this feature, offering greater attention to life aspirations, greater flexibility for the students. So NEP says कि again इस फीचर की वजह से जो रिजिड बाउंड्रीज है करंट सिस्टम में वो हम रिमूव कर पाएंगे. इट विल बी एबल टू क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स. स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं फॉर इट एट द ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डॉक्टरल लेवल्स. सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year of the study, या डिप्लोमा आफ्टर 2 years एंड डिग्री आफ्टर 3 year प्रोग्राम. एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये डिजिटली स्टोर करेगा सारी एकेडमिक क्रेडिट्स जो स्टूडेंट्स अर्न करेंगे. तो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टैब्लिश किया जाएगा. केरला गवर्नमेंट का मानना ये है कि वो इस फीचर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी स्टेट में, एंड स्टेट विल अलाउ मल्टीपल एंट्री, बट एग्जिट विल बी अलाउड ईदर आफ्टर 3 years विद अ डिग्री और आफ्टर 4 years विद अ ऑनर्स डिग्री. So यहाँ पे again bringing all the states on the same page, that is going to be a task. So socio-economic caste census regarding, again, Kerala is going to take a decision on this. This will be again done because they want to revise their OBC list. So socio-economic caste census. Recently, we saw that this topic was in news because of it was being carried out in the state of Bihar. उस पे stay लगा दिया गया, and then again it was given a go ahead by the High Court. So कंसर्न्स क्या है सोशो इकोनॉमिक का सेंसस. बेसिकली जो डेटा आप कलेक्ट करोगे अगेन उसको आप यूज कहाँ करते हो, किस पर्पस के लिए यूज करते हो, दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू. So Buddhist cave sites in Sri Lanka, again, these are important for us as well. So team from Telangana visits those caves. This is a picture also. The Buddhavanam team from Telangana at the Buddhist rock cut caves in Mathale, Sri Lanka. So Buddhavanam team from Telangana visited this 3rd century BC Buddhist rock cut caves at Mathale on the Colombo Kennedy route in Sri Lanka. So herein at this site आपको मिलेंगी teachings of Lord Buddha. They were scribbled for the first time on the palm leaves. So this is the first site जहाँ पे ये practice start की गई. And बुद्धवनम जो है एक ये massive बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम के ऊपर पार्क डेवलप किया जाएगा बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट एट नागार्जुन सागर. So Buddha's teachings, they are called Tripitak, Suttapitak, Vinaypitak and Abhidhamma Pitaks. So we need to know कि again teachings majorly क्या theme के बारे में बात की गई है इन तीनों पितकास में, and which were again transmitted orally until that time. So initially these were orally transmitted, एंड यहाँ श्रीलंकन साइड से देवर जो टीचिंग्स थी उनको पाम लीव्स के ऊपर स्क्रिबल करना स्टार्ट कर दिया गया था. So this started under the auspices of the Sri Lankan king Devanam Piyatissa, who is the contemporary of King Ashoka.
Simultaneous polls, positives and negatives. सबसे पहले we need to think about that feasibility क्या है Indian political system में, and post independence we started with the system of simultaneous polls only. हम simultaneous polls India में conduct किए गए, but कुछ states में again with untimely dissolution या dissolution of the houses before completion of 5 years term, ये system break हो गया. So here in this article, we see simultaneous polls, but only in a presidential system. So a fresh attempt is being made by the current government to be towards one nation, one poll. This we are seeing, and this would mean कि सारी states में elections एक साथ होंगे along with the general elections to Lok Sabha. And इसकी वजह से क्या चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाएंगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो रहेगा दैट वुड बी बहुत सारी ऐसी स्टेट असेंबलीज रहेंगी जिनको हमें पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म. एंड यहाँ पे भी अगेन वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स एज वेल. So options that are undemocratic. So this is यहाँ पे भी इसी की there's a deeper problem. जब हम बात करते हैं इस पूरे सिस्टम को फर्स्टली इम्प्लीमेंट करने की, नॉट जस्ट कि हमें स्टेट साथ में चाहिए, कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी रहेंगे जिन्हें हमें मीट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगेन, एंड उनके साथ साथ वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा. So this is one area. So according to the author, he feels कि one nation, one poll, it is possible only if we switch to a presidential form of government, जहाँ पे government is run by a directly elected president or governor who does not need to enjoy the confidence of the majority of the house. So India में since we are having the parliamentary form of government, so the author says कि पहले आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, या the simultaneous elections it is more suitable to a presidential form of system. So this is also another debate which goes on in India कि whether we need to shift towards this presidential form of government or not. So this is his viewpoint. So this happens in countries like United States में there is this presidential system which they follow, and in those countries there's also clear line of succession laid down for the president or the governor also. So president agar suppose he or she dies in the midterm, vice president and thereafter the speaker, they becomes the president for the remainder of the term. So such a presidential system, it can have one nation one poll without compromising essence of a democracy. क्योंकि अगर suppose before completion of the term हाउस डिसॉल्व हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो अगेन ये चीज से हम कैसे टैकल करेंगे इफ वी आर हैविंग दिस साइमल्टेनियस पोल सिस्टम. सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहां पे अगेन सक्सेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सपोज अगर प्रेसिडेंट मिड टर्म ही और शी डाइज तो वाइस प्रेसिडेंट वुड सक्सीड एंड उसके बाद स्पीकर जितनी भी रिमेनिंग टर्म रहेगी. तो इस तरीके से साइमल्टेनियस पोल्स को हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. So law commission का क्या व्यू पॉइंट है on having simultaneous elections in India, and some parliamentary committees they have also recommended. So conclusion was that it would be exceedingly difficult to implement it without substantial changes to the constitution. So कुछ ऐसे सजेशंस भी रहे कि इवन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा सकते हैं, एंड सपोज अगर गवर्नमेंट लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस बाय अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सच अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इट मस्ट बी अकम्पनीड विद अ कॉन्फिडेंस मोशन इन एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. सो इस तरीके से अगेन अगर प्रीमेच्योरली हाउस डिसॉल्व हो जाता है, इट लूजेस द कॉन्फिडेंस, तो साथ के साथ जैसे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं, सो वी नीड टू आल्सो इंट्रोड्यूस अ कॉन्फिडेंस मोशन आल्सो जिसमें वी कैन गेट द ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बिफोर विदाउट गोइंग फॉर इलेक्शंस. सो इस तरीके से अगेन 5 साल के लिए वी कैन हैव द गवर्नमेंट. सो दिस विल इंश्योर कि सम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट या इट अदर कंटिन्यूज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. बट जो प्रॉब्लम इज दैट इज लेजिस्लेचर्स दे मे नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. तब हम क्या करेंगे, तो तब कैसे हम इंश्योर करेंगे कि कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट कम्स इनटू द पावर विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस. तो एक वो प्रॉब्लम हो सकती है. नीड फॉर अमेंडमेंट्स, दिस वाज ऑलरेडी टेकन अप. कौन कौन से एरियाज हमें अमेंड करने पड़ेंगे, प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड नीड टू बी अमेंडेड टू स्विच टू द साइमल्टेनियस सिस्टम्स, एंड एसेंशियली यहाँ पे बात की जा रही है अमेंडमेंट्स टू शिफ्ट टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम दैट विल बी इन पार्ट 5
which is regarding the union. Chapter 1 में executive में article 52 to 78, chapter 3 part 6 में which is related to states, यहाँ पे हमें changes करने पड़ेंगे. Then introduction to the presidential system, it would also require amendments to include several new provisions also. कुछ और provisions भी हमें add up करने पड़ेंगे. So this is going to be the area जहाँ पे हमें changes करने पड़ेंगे. तो एक ही मेजर वी कैन से कि इस आर्टिकल के थ्रू, एडिटोरियल के थ्रू हमें यही समझ में आया कि एक जो न्यू पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं कि simultaneous polls it is more suitable to presidential form of government. And again उसके बाद we can discuss about कि presidential system इंडिया में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, parliamentary form of government के क्या benefits हैं जो presidential system में हमें नहीं मिलेंगे. So that's how we can proceed. Again, economic corridor, West Asia economic corridor की हम यहाँ बात कर रहे हैं, the Israel link and again geopolitics से related कुछ concerns भी हमें address करने important हो जाएंगे. तो joint statement which is called the Delhi Declaration G20 summit के बाद हम बात करें तो this was one of the major outcomes, key outcomes out of the G20 summit 2023. So despite the absence of China's president and Russia's president, the summit, India still got their agreement for the declaration, which sums up the achievement. So again, we got the global consensus on this. So this was another achievement, substantially speaking. Statement, it is the Hebrew, it is the parable, which is, yeah, the word, this is Hebrew word for characterless things, as it does not name Russia ko koi again is declaration mein Russia was not mentioned for the aggression against Ukraine, but it does evoke UN Charter and principles of territorial sovereignty. तो indirectly mention किया गया, बात की गई है. So Israel is the weak link in this India Middle East Europe economic corridor plan. तो एक concern जो है that is majorly associated with Israel. So this is going to be a rail and ship route between transport goods that would be transporting goods to Europe from India via the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. So in countries ke through this will be passing by, and this project will change geopolitics for the future. Fact that it challenges China's BRI initiative. This is beside the more significant point. And even US president, he has called this to be a real big deal, which is transformative for all those who are involved and even for the rest of the world. So in the report of G20 Arab News, it found that India के जो G20 leaders summit था, it had an unprecedented Middle Eastern presence. So India set a precedent in G20 history by inviting the most Middle Eastern countries ever to take part as guests in a group's key summit. So this was also another change जब हम देखें, and one wonders why Israel, जो इंडिया का strategic partner भी है, it was not given such an invitation. तो Israel was not invited. तो यहाँ से again problems थोड़ी start हो सकती हैं. So India invited 9 non-member countries, which included Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, and UAE. So Israel was not invited. And we are also seeing that Saudi Arabia, it is also willing to end the diplomatic boycott of Israel. So, एक economic corridor की वजह से we can also see कि बाकी peace efforts भी लिए जाएंगे, so that again यहाँ पे एक example Saudi Arabia और Israel के बीच में जो problems हैं वो भी solve हो सकती हैं, and this would historically change things. Apart from this Muslim country, which helps Israel with other countries such as Pakistan, Indonesia, Malaysia, वहाँ पे again we can see acceptance of Israel by most of the important religiously speaking Muslim countries. So even बाकी countries तक इसका impact हो सकता है. So this is going to be one of the multiplier effects of this thing.
So Fukushima nuclear waste water controversy क्या है and how does contamination ये हुआ कैसे, why is water being released now, इसको अभी क्यों रिलीज किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं रिलीज किया गया एंड फ्यूचर में क्यों नहीं रिलीज किया जा सकता, प्रोसेस क्या है ऑफ ट्रीटिंग द न्यूक्लियर वेस्ट वाटर, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड विच विल सच ट्रीटमेंट, क्या अगेन ट्रीटिंग द न्यूक्लियर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद आर वी इंश्योर्ड कि ये सारी रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है ये वाटर में से रिमूव कर देता है. सो व्हाई हैज चाइना बैंड द सी फूड फ्रॉम जापान, ये भी अगेन इस चीज से रिलेटेड है. साउथ कोरिया ने अगेन कैसे रिएक्ट किया है टू दिस डिसीजन, तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. सो एक्चुअली हुआ क्या, सो 2021 अप्रैल में जापान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया देयर प्लान कि how they'll be going ahead with releasing over 1 million tons of contaminated water from the Fukushima nuclear plant into the sea over the next 30 years. So इस प्लान को अनाउंस किया गया 2021 में by Japan. So जो ये वेस्ट वाटर था, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक 2011 में जो अर्थक्वेक आया एंड सुनामी व्हिच disabled this Fukushima Daiichi nuclear power plant in Japan, leading to release of radioactive materials as well. And after more than 1 decade of storing this wastewater, Japan ने बोला है कि they are running out of storage space. उसकी वजह से they have taken this decision कि after treatment this water को release किया जाएगा. सो इस वेस्ट वाटर को ट्रीट कैसे किया जा रहा है, तो इट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जो जापान की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है. एंड 2011 से ही इट हैज बीन गिवन दिस चार्ज कि अगेन उसको वो कैसे इसको डीकमीशन करेंगे, द फुकुशिमा डेची पावर प्लांट एंड मैनेजिंग दिस वेस्ट. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इस इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को दी गई है एंड दे हैव ट्रीटेड दिस वाटर थ्रू मल्टीपल टेक्निक्स. नोटेबली जो टेक्निक यूज की गई है दैट इज एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम, जो अगेन 62 टाइप के रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को वाटर में से रिमूव कर देता है, बट ये ट्रिटियम को रिमूव नहीं कर पाता है. सो एक ये कंसर्न भी है, अगर इस वाटर को रिलीज करेंगे तो मरीन लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड इवन ह्यूमन लाइफ पे भी कैसे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है. यू कैन हेयर एंड थिंक अबाउट द फूड चेन एज वेल. सो जापानीज गवर्नमेंट का कहना ये है कि ट्रिटियम के अराउंड वो बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ट्रिटियम का इन दिस वेस्ट वाटर दैट इज नॉट एक्सीडिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो इट इज सेफ टू रिलीज दिस वाटर. सो यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो सर्च अबाउट कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं. देन दिस इज अगेन यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियर वॉचडॉग इज IAEA. सो अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक जापानीज इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने बोला कि जो रेडिएशन एमिट की जाती है बाय द ट्रिटियम दैट इज एक्सट्रीमली वीक एंड उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं विद अ सिंगल शीट ऑफ पेपर. तो दैट इज सो वीक इन इट्स पावर और इट्स इम्पैक्ट. एंड ये भी बोला जा रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ट्रिटियम की दैट इज ऑल्सो 6 times लेस देन द लिमिट फॉर ट्रिटियम इन ड्रिंकिंग वाटर सेट बाय WHO. सो यू कांट रिमूव ट्रिटियम बिकॉज इट इज आइडेंटिकल टू हाइड्रोजन. एक ये मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए हम ट्रिटियम को रिमूव नहीं कर पाते. सो रिमूविंग इट, केमिकली एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द वेस्ट वाटर, दैट वाई इट बिकम्स क्वाइट इम्पॉसिबल. Then लोगों का क्या रिस्पॉन्स है टू दिस डिसीजन. सो fears persist within majority of the people are scared, and a poll that was conducted by Japan's press, it shows कि 16% respondents जो हैं they showed opposition to discharge this water. 30% ने ना तो अपोज किया ना इसको फेवर किया. सो इसकी वजह से, इस डिसीजन की वजह से अगेन लोगों ने सी फूड को होर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस वाटर को रिलीज करने की वजह से अगेन जो कंटेमिनेशन सी फूड में देखने को मिलेगा, अगेन उसकी डिमांड कम हो सकती है. तो डिमांड कम होगी एंड अगेन सप्लाई ऑफ सेफ सी फूड वुड रिड्यूस, तो अगेन प्राइसेस वुड इंक्रीज. सो दैट्स व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड hoarding seafood. And South Koreans may we see 80 to 85% they are opposing this decision. So is this water safe or not? So जो ट्रिटियम है, एक तो ये it can be easily absorbed by the bodies of living creatures when it is in the form of tritiated water, and rapidly it can get distributed throughout the water bodies, throughout the body
of the living creatures via the blood. So since treated water, it can pass through the placenta also, it could lead to developmental effects in babies also when this is ingested by the parent woman. So chemically, ऐसा कोई difference नहीं between treated water and water with treated. So these are few areas that is important for us to understand. Definitely, this is also impacting regional politics as well. So China's hardline response to this decision. So China का जो decision है, we need to understand it from the lens of geopolitical angle. Japan और Sino relations, Japan और China के बीच में जो relations है, they have fluctuated repeatedly recent times में, especially जब we are seeing कि China की जो military presence है South China Sea में, that is increasing, that is growing, and this is again evoked more nationalist sentiments from both the sides. And साथ के साथ South Korea और Japan की relationship that is strengthening at the same time. So China is also watching that. China, of course, it is not comfortable about the growing bond between South Korea and Japan. So Chinese government का जो aim है, that is to make it an issue just to create further strategic fissures between South Korea and Japan. So China इसको इस angle से देख रहा है. So आने वाले टाइम के बारे में बात करें, what next? So Japan रिलीज करेगा this treated wastewater over the period of next 30 years, and it would also continue to monitor the sea waters radiation. So but again, अगर वो water release हो गया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे. आप monitoring करो, कुछ करो, उसके बाद again जो impact होगा वो होगा. So India-Canada tensions we have seen it's because of the Khalistani issue. So how this rising influence of ethnic Indians, it has caused friction between India Canada tie. So Indian diplomats, they have this obligation उनको highlight करना पड़ेगा the damage to the bilateral ties. जब हम Canadian politicians की बात करते, they're supporting separatism in India. So these diplomatic activities cannot be construed as interference in Canada's internal affairs because these are directly related to India. And again, जो Canadian politicians भी है, they are supporting separatism in India. So we can't say कि अगर India कुछ बोल रहा है, India का कोई stand है, so that is an interference in Canada's internal affairs. So this is not an internal affair. India का response we saw कि again इंडिया के ऊपर जो एक्विजिशंस लगाए गए या बोला गया कनाडा के द्वारा कि इंडिया का रोल है, बट ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. सो यू कैन merely say and accuse इंडिया की इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज रोल. जो भी रिसेंटली हरदीप सिंह निज्जार की डेथ हुई कनाडा में, सो उसकी वजह से हमें रेपरकशंस देखने मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वीजा सर्विसेज रोक दी गई हैं. डायस्पोरा हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जो एथनिक इंडियन कम्युनिटी है इंक्लूडिंग सिख, they play an important role in Canada's public life also. So there are currently some ethnic Indians in the Prime Minister Justin Trudeau's cabinet also. So even politics में भी Indian diaspora का बहुत important role है जब हम Canada की बात करते हैं. So Canada's indulgence of the Khalistani elements and aptly attributed to the vote bank politics. So this is what our Minister of External Affairs had to say कि again इसको जो issue है इसको एक तरीके से vote bank politics के लिए use किया जा रहा है. तो हिस्ट्री में भी अगर हम देखें द पास्ट वी सॉ कि मिस्टर ट्रूडो ही आल्सो कमिटेड ऑन जब फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था इंडिया में, सो दैट वाज प्योरली डोमेस्टिक इंडियन इशू. सो इंडिया नेचुरली फाउंड मिस्टर ट्रूडोज रिमार्क्स अनएक्सेप्टेबल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी. सो कहीं ना कहीं नॉजिस ये सिर्फ खालिस्तानी वोट बैंक तक लिमिटेड नहीं है. इंडियन डायस्पोरा कैसे पूरा अगर आप इसको ब्रॉडर एंगल से देखोगे तो इट इज एसोसिएटेड विद द वोट बैंक पॉलिटिक्स. सो दैट्स देयर. एंड सो यहाँ पे अगेन पॉलिटिक्स एंगल को ये हाईलाइट किया जा रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है कनाडा की गवर्नमेंट है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द गवर्नमेंट सर्वाइवल. दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड अगेन जो ये पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी,
this is important key again if they want to have the support, enjoy the support. And another important personality is the Jagmeet Singh, who's the NDP leader, is also committed Khalistan sympathizer. So इसलिए जो current incumbent government है, specifically Mr. Trudeau, that's why we are seeing कि जो political angle is पूरे issue में आ जाता है, they are not opposing Khalistani issue, and they are in a way this is visible कि वो support कर रहे हैं इस चीज को, because again जो political personalities involved हैं, because they support this Khalistan issue. Again, importance of human capital, इसको समझना बहुत important है. Human capital is the most precious capital, and it's extremely important to protect this asset from a variety of risk it is exposed to, including even illnesses. So when we talk about the quality of the human capital, firstly, the skills training that becomes very important. The quality of education is important, quality, affordability, accessibility to education. Again, the health, and we can say the presence of the healthcare services in far-flung areas, that is also important. Our immunity to different diseases, and of late we are seeing the spread of non-communicable diseases, so how we are ensuring in preventing them, or even making people aware how to deal with certain kind of non-communicable diseases. Again, uske piche bhi the lifestyle changes, they are the major reason. So all these things are interconnected with each other, and also definitely we can also include the element of the climate change impacts when we talk about the quality of human capital. So Azerbaijan takes control of Karabakh region, जो Nagorno-Karabakh region है. So this is a site of dispute between Azerbaijan and Armenia. So यहाँ पे map work important हो जाता है. So ethnic residents of the breakaway territory, they depart following an offensive that has been launched by Baku. Armenia publicly distances itself from this traditional ally Russia due to lack of support offered. तो रशिया की तरफ से इतना कोई major support नहीं दिखा to Armenia. So वहाँ पे भी हमें कुछ changes देखने को मिल रहा है. Refugees from the Nagorno-Karabakh region, you can see this picture, they arrive at the checkpoint. So यहाँ पे again कहाँ पे refugee camp set up किया गया, that location also becomes important for us. So bankable projects, they are being readied as proof of concept. So policy reject on the cards to woo the global patient funds. So definitely India may be require massive investments infrastructure may for green transition in the coming years, and even domestic जो हमारा financing structure है, they are making slow headway. So that's why we are looking for all other options for financing. So उसके लिए government is taking up efforts to tie up with the global patient funds for such projects.
So example आप देख सकते हो, Singapore funds जो हैं, they are lined up with $8 billion for the Indian realty sector. So therein we are seeing basically foreign funding sources के ऊपर अगर हमारी dependence increase हो जाएगी, तो that would be also another concern area for us, क्योंकि अभी तक massively we are dependent upon the domestic financial sources, the borrowing sources. So boosting the digital agricultural trade, क्या already measures लिए जा चुके हैं, कौन सी schemes work कर रही है? So even role of states in promoting it is extremely important. So how we are trying to ensure कि outreach of electronic national agriculture market को हम increase कर सकते हैं. So Union Agriculture Ministry ने urge किया state governments to relax the norms, like they can allow the traders from other states to buy and sell the commodities without bank guarantees, and then provisioning of the unified license for seamless statewide trade access allow करना चाहिए, and procurement at the farm gate. So इसकी वजह से we can see कि e-नाम का जो network है, this can be expanded further at micro level. So we are seeing a steady rise in the agricultural exports in the 4 years as well. So this is a good development. So past 4 years, there has been sustained increase. Sustained increase, please mind the keyword they're being used. Sustained increase, a steady rise in agriculture sector's exports to GDP ratio, underscoring the sector's progressively enhanced contribution to the overall exports of the country. So this you can remember as one of the newly emerging major sector which is contributing to our exports. And अब हमारे लिए जो challenge है, that is we need to maintain at this level and ensure कि ये with time increase होता जाए. So this would be again giving a boost to our agricultural development as well, and income of the farmers too. So the new economic corridor है, the West Asia Economic Corridor, it will be basis of the world trade for centuries. These are the words of the Prime Minister. He said it will become basis of the world trade for hundreds of centuries and years, and history will remember that it was envisioned. कैसे इसको envision किया गया, कैसे इसने function किया on Indian soil. Coming to Indian Express newspaper. So world page पे Biden is going to hold the lead of the Pacific Islands to counter China's influence. So even जो West Asia Economic Corridor है, that is also seen as an alternative to China's Belt and Road Initiative. So Indo-Pacific में भी कैसे China की influence counter कर सकते हैं. USAID is taking lead. So 3-day summit host किया जाएगा. USA is going to give diplomatic recognition to 2 Pacific Islands. On what else can we expect? एक तो Cook Islands and another small nation. New. It will be officially recognized by the US for the first time. And another challenge जो again Indo-Pacific region में देखने को मिलता है, that is illegal fishing. So इसको combat कर सकते हैं. Priority topics जो रहेंगे, that would be climate change, economic growth, public health.
So NASA's first asteroid samples from deep space, they land on Earth. And आप ये picture में देख सकते हो कि this is again from NASA's TV video show. It is showing this capsule which is released by the OSIRIS-REx spacecraft after landing on the Earth. So there's a picture of the asteroid Bennu, which is taken by the OSIRIS-REx spacecraft from a range of 15 miles. So इसको उटा डेजर्ट में लैंड कराया गया एंड सो आने वाले टाइम में अगेन जो रिजल्ट्स रहेंगे दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर अस. एक्सप्लेन्ड पेज की अगर हम बात करें तो नीट एलिजिबिलिटी परसेंटाइल इज नाउ 0. Why and the likely impact. So in a surprising announcement this last week, medical counseling committee is responsible for allotting this post graduation seats for medical education में उन्होंने बोला है कि जो eligibility रहेगी for the seats vacant this year it would be 0 percentile. So this is kind of, can say, good news for the students, and this is the first time since NEET it replaced all other medical entrance tests 2017 में कि ये जो eligibility cut off है इसको completely हटा दिया गया है. So that's there. And overall अगर हम इंडियन मेडिकल एजुकेशन सेक्टर की भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे जो कंसर्न्स है हमारे लिए वो सोचना इंपॉर्टेंट जो आता है. फर्स्टली यही है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो जो एंट्रेंस एग्जाम्स किए जाते हैं, जो नीट एक एग्जाम किया जाता है, पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते थे तो 2017 में नीट रिप्लेस्ड ऑल दोज एग्जामिनेशंस. सो वहाँ पे तमिलनाडु स्टेट का एक अलग कंसर्न था विद दिस एग्जामिनेशन. उन्होंने बोला कि हम इसको तमिलनाडु में नहीं कराएंगे बिकॉज अगेन जो कट ऑफ जाती है उसकी वजह से वी आर सीइंग की इशू ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स, दैट इज अनदर प्रॉब्लम. So that's their entrance into the medical education institutions. That is first problem. इसके बाद the medical fees, उसको आप किस basis पे, उसके पीछे क्या process of deciding the fee structure, that is another area. And even increasing the number of seats, that is also that has to be looked into as well. So Five Eyes Alliance क्या है? Canada, it is a part of this. ये एक intelligence sharing grouping है with the countries, also seen as Indian Alliance as well. So alliance form कब की गई? क्यों की गई form? That is important. The origin of this alliance it can be traced back to Second World War. UK, US उन्होंने decide किया कि वो intelligence को share करेंगे after successfully breaking the German and the Japanese codes. So 1943 में ब्रिटेन यूएसए जिसको बोलते हैं ब्रूसा अग्रीमेंट, that was laid and it laid down the foundations for what would become this US UK agreement after UK computer scientist this is Alan Turing's visit to Washington and several visits between two countries officials. So इसको अब UK USA was signed in 1946. कनाडा ने इसको ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने इनको ज्वाइन किया. सो अग्रीमेंट ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया दो इट्स एग्जिस्टेंस वाज नोन 1980 से. सो ये वर्क कैसे करते हैं? रिसेंट ईयर्स में जो अगेन कॉमन इंटरेस्ट है लाइक बैलेंसिंग द राइज ऑफ चाइना, दिस हैज अगेन ब्रॉट ऑल दीज कंट्रीज क्लोजर. And some have attributed this closeness to the common language that they share, mutual trust built over decades of association. तो 3 Hoysala temples this we saw कि उनको UNESCO हेरिटेज लिस्ट स्टेटस दे दिया गया है. So they are on this list. So 3 temples जो हैं वो कैसे different है that we can understand here. So ये picture में आप देख सकते हो, this is the Keshava temple at Somnathpura and it was built during mid 1200s. So Hoysalas कौन थे? They held power in Karnataka 10th से 14th century के बीच में, and it began as a provincial governors under Western Chalukyas, but as the two dominant empires of the south,
जो वेस्टर्न चालुक्यास एंड चोलास थे, दे क्रम्बल्ड. इसके बाद वी सॉ होयसलास, दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज द रूलर्स. So two of these temples जिनको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट स्टेटस दिया गया है, they are located in the cities जहाँ पे again ये जो कैपिटल था होयसलास का, इन दो सिटीज में दो टेम्पल लोकेटेड थे. एक तो बेलूर एंड देन हेलबीडू, और जिसको बोल सकते हैं आज के टाइम में द्वार समुद्रा. So sacred ensembles of Hoyslas were built over these temple walls because जो temples बनाए गए हैं, they are using the soft stone. So soap stone जो बोल सकते हैं, again उसको carve करना easy होता है. तो you can see कि picture में भी they're intricately carved. And notable features again ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है soap stone यूज किया गया है. This is malleable stone जिसको it is easy to carve out, and this is one of the reasons why we are seeing abundance of intricate sculptures on the temple walls. So we are seeing depictions from epics and Puranas and detailed sculptures. They give an idea of society of the time. So that is why it becomes important for us to understand them. And another special feature is Hoysala architecture. It is unique confluence of the styles as well. So ये basically यहाँ पे हमें amalgamation देखने को मिल रहा है 3 distinctive styles का. एक तो mainstream जो Dravidian architecture था, that is represented in the Pallavas and Chola temples. Then variant of Dravida style that emerged in southern Deccan in Chalukya and Rashtrakuta temples, जिसको हम बोलते हैं Visara style temples, and then North Indian जो Nagara style temples हैं. So इन तीनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है. नहीं देख सकते हो, इट इज बिल्ड ऑन अ स्टिलेट प्लान, जो स्टार शेप्ड प्लान है. यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर्स, पॉइंटेड कॉर्नर्स, दे आर विजिबल. सो ये टेम्पल स्पेशल कैसे हो जाते हैं हमारे लिए? तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल होयसला टेम्पल्स जो स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं. और जो 3 मेजर टेम्पल्स हैं, दे आर बिलीव्ड टू बी अमंग द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल्स ऑफ होयसला आर्ट. So new Vande Bharat trains, they match aspirations of a new India. So boosting the connectivity, you can see multiple rail routes पे Vande Bharat trains inaugurate की जा रही हैं. So 9 trains on the routes across 11 states और announce की गई हैं. Specifically tourist routes, pilgrimage routes के ऊपर इनको initially announce किया जा रहा है. So definitely it is also going to give a boost to the tourism industry. तो इंडिया और यूएन ने लॉन्च किया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. So this is joint capacity building initiatives. This will operationalize development relevant deliverables of India's G20 presidency, and this aims to share countries' best practices with the partner countries in global south. So India UN capacity building initiative, this was announced at the India UN for the global south delivering for development. So इंडिया के जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपर्टीज, वो हम शेयर करेंगे विद आवर पार्टनर कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल साउथ.
So जो gap exist करता है between law and justice, वो हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो जो न्यू बिल्स आ रहे हैं टू रिप्लेस द क्रिमिनल लॉज, अगेन वो इंडिपेंडेंटली पूरे सिस्टम को ओवरऑल नहीं कर सकते. जो रियल चेंज हमें चाहिए, इट कैन ओनली कम फ्रॉम रिकॉन्फिगरिंग द इंस्टीट्यूशंस दैट प्ले अ रोल इन डिलीवरिंग क्रिमिनल जस्टिस. सो दैट्स हाउ वी कैन क्लोज दिस गैप जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन लॉ एंड डिलीवरिंग जस्टिस. सो अगेन वी नीड टू लुक इन फॉर कि जो जस्टिस डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं टू गेट रियल चेंज. So we need to understand the changing dynamics of the social production of crime that raises difficult questions about, again, obsessive singular focus of criminal law on the individual criminal responsibility. So what role and kya weight diya jana chahiye to environmental factors in engendering and perpetuating conditions जिसकी वजह से crimes commit किए जाते हैं. So in fact, continued prevalence of many crimes that is also deeply influenced by the socio-cultural realities of our society. तो different तीन major dimensions हैं जिनको हमें explore करना और important है. We really want to make a change. So पहले के टाइम की अगर हम इंडियन स्पेस सेक्टर की बात करें तो स्पेस इट फंक्शन अंडर अ व्हील ऑफ सीक्रेसी. इतनी ज्यादा हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती थी. तो नाउ इफ वी सी क्या मेजर चेंज हुआ है, तो नाउ वी आर सीइंग सिनर्जी बिटवीन एकेडमिया, रिसर्च, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स. एंड कल ही हमने एक केस स्टडी देखी थी कि जो इंजीनियर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, व्हिच हैव बीन डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है, that is also one of the important factors behind the success of ISRO operations. उनको अभी तक salary भी नहीं दी गई है. तो you need to keep both the things in your mind कि जो success जिस तरीके से our space sector is developing, it is moving forward, कुछ challenges भी exist करते हैं. We can't overlook and ignore them. So India is hosting the Global India Maritime Summit. So we see यहाँ पे again new eastern route जहाँ पे it would be handling the cargo shipments between India and Russia. So look east policy वहाँ पे we are seeing again मैरीटाइम डेवलपमेंट या ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो चीजें डेवलप हो रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. एंड ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है जो व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई को कनेक्ट करता है. सो बोथ द साइड्स इंडिया और रशिया वी आर इंटरेस्टेड एंड अगेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड with the discussions to further explore and make things more rational and relevant. सो गवर्नमेंट की जो श्योरिटी बॉन्ड मार्केट है वहां पे हमें इतना कुछ सक्सेस या स्मूथ फंक्शनिंग देखने को नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस विच आर सम ऑफ द टेक्निकल चैलेंजेस, कुछ ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है. तो पहले श्योरिटी बॉन्ड्स होती क्या है? सो एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्टिंग पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसमें, विच इज अ ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस because of breach of a contract या other types of non-performance. So इस तरीके से ये एक इंश्योरेंस की तरह वर्क करता है एंड बेसिकली श्योरिटी नेम में ही श्योरिटी है. तो इशूइंग इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर अ प्रीमियम इन केस अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो आपको अपना पैसा जो प्रीमियम अमाउंट है वो रीपे किया जाएगा, उसकी श्योरिटी दी जाती है. सो दो बेसिक लेवल की श्योरिटी बॉन्ड्स लॉन्च की गई थी दिसंबर 2022 में. दैट वर इशूड बाय बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड वी आर सीइंग कि ऐसे कोई मेजर ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रहा. सो इट इज टेकन ऑलमोस्ट 3 years टू गेट इंश्योरेंस रेगुलेटेड अथॉरिटीज का अप्रूवल लेने में 3 साल लग गए फॉर द श्योरिटी बॉन्ड प्रोडक्ट. एंड बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी तो उनको भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है in terms of constructing the road projects less risky. That makes surety bond a safe and profitable business for the insurers. So इस तरीके से भी थोड़ी again the surety bonds, they can become much more attractive for the people. So surety bond, it would also help the contractors to have again financial closure of their projects without depending upon any only the bank guarantees.
So they need extensive reinsurance support, and no primary insurers they can issue any policy without proper reinsurance backup. So आने वाले टाइम में एक तो वी एक्सपेक्ट कि श्योरिटी बॉन्ड्स जो हैं वो और चीपर हो जाएंगी देन द कॉस्ट ऑफ द बैंक गारंटी, which no way it can happen. And if we undercut banks on pricing, then we are again ending in a situation जहाँ पे it would really be unsustainable for us. And then we are having the Indian Contract Act और जो IBC Act है वो भी recognize नहीं करती हैं rights of insurers at par with the financial creditors yet. So ये reform भी एक important है, and thus insurance companies they are not having any recourse. जब हम बात करते हैं recovery, like जो opportunity है जो option banks के पास available है insurance companies के पास, तो ऐसा कोई option available नहीं रहता है जब अगर again ऐसे कोई default की situation आती है. So इंडिया में जो श्योरिटी बॉन्ड्स की मार्केट है, we need to take certain steps so that again हम एक तरीके से legally enforce कर सके this tripartite contracts जो compliance guarantee करे, payment guarantee करे and performance also. So USA में interest rate increase होने की वजह से we are seeing FPIs outflow from the Indian equity markets. So FPIs they are selling from India and they are shifting to US market क्योंकि वहाँ पे उनको higher interest rate मिल रहा है. तो इसको हम बोलते हैं कि interest rate अगर differential ज़्यादा रहेगा तो वो भी एक तरीके से जब हम FPI इन्वेस्टर्स की बात करते हैं वो इंडिया के लिए नेगेटिव रहता है. एंड अगर RBI इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं कर रहा है, यूएसए का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो यूएसए के फेवर में ज्यादा रहेगा एंड दैट वुड बी इंक्रीजिंग ऑल्सो इन फेवर ऑफ यूएस. तो इसलिए FAs दे आर आउटफ्लोइंग, जिसकी वजह से वी आर सीइंग प्रेशर ऑन रुपी स्टिल बिल्डिंग अप. So that's all for the day. Thank you so much for joining us in today's analysis video, and do subscribe to the channel. Keep watching.